Agriculture is most healthful, most useful, and most noble employment of men by George Washington. Hello everyone, this is Kasturi and you are watching SST Buzz. Today we are going to understand about various type of farming and cropping pattern. ये ऐसे एक चैप्टर है जो क्या ना from every line we can get question. So the chapter needs actually intense care from us. So let's start. Primitive subsistence farming. First we will know the meaning of primitive subsistence farming. Primitive means old or ancient. Subsistence means for existence. And farming already we know the process through which we cultivate. So primitive subsistence farming is a process through which old mechanism is used for cultivation. ये फार्मिंग में ओल्ड मैकेनिज्म यूज किया जाता है, ठीक है. नाउ दिस primitive subsistence farming called as slash burn method and shifting cultivation. तो एक के बाद एक जानेंगे why slash and burn method and why shifting cultivation. Slash and burn method why? Because they don't have their permanent land. Actually they are nomad. From here to there they used to move one place to another place. तो जहाँ कहीं भी गए होंगे और the place is full of bushes and all these things, so they used to clear it, then burn it. Whatever ashes would be there, they mix it with soil, and within 2-3 months that soil would be ready for cultivation. So in this process very naturally they used to cultivate, so that's why it is named as slash and burn method. नाउ हम जाएंगे दूसरे पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये नाम ही तो बता रहे हैं, शिफ्टिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो वो जाने का क्यों ज़रूरत है? अगर यही एक लैंड को उन्होंने अपना बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बना लिया है, तो फिर क्या रीज़न क्या है कि दूसरा लैंड पे जाए? तो रीजन यही है, नेचुरली दे यूज टू प्रिपेयर दैट लैंड एंड आफ्टर 2-3 years दैट सॉइल फर्टिलिटी विल गो डाउन. सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगा. सो फॉर दैट व्हाट दे आर गोइंग टू डू? So they need to shift from one place to another place. So that's why primitive subsistence farming also known as the shifting cultivation and slash and burn method. ठीक है. नाउ अदर फीचर्स जानने से पहले हम थोड़ा इनका और भी बहुत सारे नाम हैं, तो वो नाम के बारे में जानेंगे. क्यों? क्योंकि फ्रॉम हियर वी यूज टू गेट क्वेश्चन एवरी ईयर. ओके, सो झूमिंग एक्चुअली दिस इज नो, these are the regional name. So झूमिंग it is told in northeastern part of India. Pamlo it's specially for Manipur. Dipa for Bastard, MP. Now there Milpa is given. Milpa is for Mexico, Roca for Brazil, and Ladang for Indonesia. So these are different name, but concept is there, that is primitive subsistence farming. ठीक है. Now हम जानेंगे ये सारे फीचर्स. सो फर्स्ट इट इज गिवन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. डेफिनेटली अपना परमानेंट तो कोई लैंड है ही नहीं, जो जगह जैसा है. समटाइम्स फुट हिल ऑफ हिमालय, समटाइम्स अदर प्लेटू एरिया और अदरवाइज डेंस फॉरेस्ट, वेर एवर. सो हाउ मच दे यूज टू गेट लैंड, वो वहीं पे वो दैट दे ट्राई टू मैनेज. So that is definitely small plot of land. Now second features is there, old and simple tools. Old and simple tools क्या क्यों है? क्योंकि वो तो है ही nomad. तो उनके जो वेरी सिंपल मैकेनिज्म टूल्स दे यूज टू यूज फॉर देयर कल्टिवेशन, वो हो, डाउ, डिगिंग स्टिक. सो सिंपली दे कैन मेक ऑल दिस टूल्स. ऐसा नहीं है कि वो दुकान से भी लाते हैं, वो खुद हाथ से अपना जैसा कुछ बना लेते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वन इज देयर फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर. फैमिली एंड कम्युनिटी उनका काम ही तो वही है कि थोड़ा बहुत अपना कैटल होता है, कैटल को संभालना और कल्टिवेशन के जरिए दे यूज टू रन देयर फैमिली, और कैटल के जरिए वो अपने फैमिली मेंटेन करते हैं. सो हियर दैट्स वाई द होल फैमिली दे यूज टू कंट्रीब्यूट फॉर देयर कल्टिवेशन. सुबह खाना बना के लेके चले जाते हैं और वहाँ पे द होल डे दे यूज टू कल्टिवेट, फिर शाम को आ जाता है घर पे. लाइक दैट द होल फैमिली मेंबर दे यूज टू कंट्रीब्यूट फॉर दैट कल्टिवेशन. नाउ प्लस
कम्युनिटी लेबर, कभी के बार अगर लेबर ओरिएंटेड फार्मिंग है कि थोड़ा ज़्यादा लेबर चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, आसपास में जो नेबर हैं उनके साथ वो सेटलमेंट करते हैं कि तुम मेरे टाइम पे कर दो और तुम्हारे जब बारी आएगा तब मैं कर दूंगी, लाइक दैट. सो फैमिली एंड कम्युनिटी labor. Now depends on nature. So for cultivation we know two basic conditions are there. Whatever, first one is land and the second one water. These are needed. Okay, so now these two, they are actually taking that, they are getting both from the nature and they are depending 100% on nature. So here we have seen slash and burn method through which they are preparing their land, and water definitely they they used to depend on monsoon. So that's why primitive subsistence farming, the purely that is depend on nature. Now last one is the low productivity. Basically low productivity would be there. Why? Because nowadays if monsoon is late, so definitely we are we are taking help of irrigation system. If soil fertility is not there, we are taking help of fertilizer, but they are not doing like that. So that's why productivity would be down. This low productivity would be there, not up to the mark. Okay, so now these are the features of primitive subsistence farming. चलो अभी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझ लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज रिटन सेमी अर्बन एरिया. सेमी अर्बन एरिया तो डेफिनेटली पॉपुलेशन वुड बी वेरी हाई, एंड हाईली पॉपुलेटेड एरिया में बड़ा लैंड मिलना तो बहुत मुश्किल है. सो लैंड वुड बी ऑलवेज स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. तो ये स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा. जैसे क्या, तुम्हारा एग्जाम्स नज़दीक है और बहुत सारे पढ़ना है, तो फिर इनपुट यू हैव टू पुट मोर इनपुट्स, मीन्स ज़्यादा टाइम पढ़ना है. सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हियर इट इज़ गिवन our semi-urban area. Now the second one, biochemicals input. So हमने all these inputs we have added. These are that fertilizer, pesticides, insecticides, all these. Now next is labor oriented. Definitely primitive subsistence farming में हमने क्या देखा है कि family member they used to work, even कभी कभी वो neighbor भी help कर लेते थे, but here who is going to help to whom? तो इसमें क्या, labor oriented. Why? First preparing land, then watering, then adding fertilizer, manure. So for all this work, even for harvesting also, so labor oriented job. Now next is there that using of irrigation. Primitive subsistence farming में हमने क्या देखा था, the farmers they were highly depend on, means not highly, fully depend on nature. So monsoon के ऊपर depend होके वो cultivate करते थे. Now here प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा के लिए तो हमें वी शुड नॉट डिपेंड ऑन नेचर. तो इसलिए अगर बारिश नहीं हो रहा है तो फिर आर्टिफिशियल वाटरिंग, इरिगेशन. सो यूटिलाइजिंग ऑफ इरिगेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर हाई प्रोडक्टिविटी. डेफिनेटली तुम अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो रिजल्ट तो अच्छा होगा ही. लाइक दैट ऑल दिस इनपुट, बायोकेमिकल्स इनपुट्स, लेबर ओरिएंटेड, टाइम टू टाइम वाटरिंग, सो डेफिनेटली हाई प्रोडक्शन, isn't? So intensive subsistence farming, this is all about. चलो अब हम चलते हैं कॉमर्शियल क्रॉपिंग की तरफ. कॉमर्शियल, दैट मीनिंग, दैट वर्ड मीनिंग इज टेलिंग अस अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट मेकिंग अ प्रॉफिट, isn't? It's not all about that own consumption. So here these are the features. First features is that HYV seeds, high yielding varieties. That type of seeds actually we had started to use in 1960 due to Green Revolution. And the second point is that biochemicals, use of fertilizer, pesticides, that insecticides, these are used for better production. Now next features is that commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture, that concept was not there earlier. पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या है ना, बिकॉज ऑफ द पीपल दे आर फाइंडिंग दिस इज ए वन ऑफ द वे
to making profit. Even we can think for exporting. Now we will go for plantation. Plantation actually part of commercial farming. So whatever features we are going to get over there, so somewhere that would be related with commercial farming. So first it is given single type of crop. Only जहाँ पे हमने देखा है इंटेंसिव subsistence farming में according to season crop would be changed also, but here for plantation only one type of crop would be grown. And the second one, large plot of land. Why? Because where profit is concerned, where trading is concerned, so definitely land would be very large. Now the third point is that migrant labor. Actually migrant labor, why migrant labor? Because that large plot of land need intense care, and that is possible only labor they are staying over there 24/7. So migrant labor kya, they are coming from far, and for that season they are staying over there for that intense caring. ठीक है. Now next one, production only for market. Definitely it's a part of commercial farming, and that is only for market, only for getting money, only for making profit. So now next, capital intensive input. Definitely huge amount of capital is needed. क्यों? क्योंकि for fertilizer, insecticide, pesticides, then irrigation system, then migrant labors. Okay, so for everything huge amount of capital needed. Now next and last features is there, well developed network of transport and communication. सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सुगर केन के इतने बड़े से इतना द ह्यूज लैंड हैज बीन कल्टिवेटेड. सो आफ्टरवर्ड्स व्हाट वुड बी from there truck will come and it would be loaded for the industry. तो इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, इनके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए ना. सो दैट्स वाई दैट 40 even coffee, rubber, even that sugar cane, for all type of plantation proper network and means proper network of transportation and communication is needed. Why? Then only in right time they can send it into the factory or elsewhere. ठीक है. So these are all about commercial farming and plantation. नाउ हम क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे. क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है, 3 टाइप ऑफ क्रॉप वुड बी ग्रोन इन सिंगल प्लॉट ऑफ लैंड. तो वो कैसे पॉसिबल? एक, जब तक 1 टाइप ऑफ क्रॉप इफ वी आर नॉट हार्वेस्टिंग, सेकेंड वन वी कांट सो even. So that's why Kharif, Rabi and Zaid, 3 types of crop we are going to grow in single plot of land. So how it would be? Let's see. So here we have 2 main season we have written, winter and summer. Okay, and that 3 cropping pattern, Kharif, Rabi and Zaid. Now first we are going to start from Rabi. So October to December sowing time, so that harvest would be there month of April to June. ठीक है, during summer season. So now what type of crop would be grown? Wheat, barley, even pea, gram, all these things. Now that April June harvesting हो गया. Afterwards onset of monsoon, that during after that, if we are taking a month of April, just within 1 month they are going to prepare soil nicely once more. Next they are sowing again Kharif crop, month of May. So on that time that would be Kharif crop, rice, jowar, bajra, like that. So that would be harvesting time would be again September October. When that they would be harvested again, they are going to sow Rabi crops. So this is actually cycle. ठीक है. Now in between Kharif and Rabi, in between just 2-3 months they are utilizing for Zaid crop. So Zaid crop के लिए actually ज़्यादा time का ज़रूरत नहीं होता. Only 2-3 months is enough. 2 months is enough. So here what type of crop exactly they are growing? So melon groups. It may be watermelon, musk melon, ठीक है, cucumber, like such kind of crop they are growing, means getting chance to grow.
So this is all about cropping pattern, and because of this pattern, so farmer used to get more productivity throughout year. I hope you have understood nicely, you have enjoyed even. Thank you so much for watching. Like and share जम के करो. Soon I will be with new topic. Tata, bye bye.